welcome back to JIRGA once again. During the previous episodes, we talked about PI, we talked about Shaheen, and as we proceed with this season, we'll be talking about new airlines and the future of aviation. And yet again, we have with us Bilal Qureshi, an aviation geek and aviation enthusiast. Bilal, thank you so much for joining us again. Thank you, Hassaan, for having me. Yeah, it's been a great pleasure. Enjoyed the journey till now. This is honestly my favorite podcast. क्यों? I might be wrong, I might be right, but for me currently my favorite airline or go to travel is Airblue, right? मुझे कुछ features उनके ऐसे easy लगते हैं currently, जो कि मैं कहता हूँ कि यार it's at least better for me to travel because I have tried the other airlines as well and I personally as a customer feel more comfortable with Airblue. ठीक है? What do you think about Airblue? What is your perspective on Airblue? What's your experience been? Okay, so if you ask me, you want to create a successful low-cost airline, what should be your example? I'd say Airblue. Okay, so for that reason, there are a few things जो कि Airblue हट के कर रही है. That is the reason they are the longest serving private airline in Pakistan right now. Recently, they have completed their 18th anniversary. So कुछ ऐसा क्या वो खास कर रहे हैं जो कि उनको अब तक सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है. सबसे पहली चीज तो ये कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं. ठीक है, जो कि हर इंसान की अप्रोच होनी चाहिए. एयरलाइन के पर्सपेक्टिव में मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल पर्सनल लाइफ के हवाले से भी, कि आप अपनी जिंदगी को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी की हुई गलतियों से सीखें. एयरब्लू ने फाइनेंशियली बैड डिसीजंस लिए, आज वो फाइनेंशियली अच्छे डिसीजन लेते हैं बिकॉज उन्होंने उनसे सीखा. एयरब्लू ने क्रैश फेस किया, एयरब्लू ने उससे सीखा. आज एयरब्लू का जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, जो सेफ्टी कल्चर है, वो पाकिस्तान में सबसे अच्छा है. ऑल्दो वर्ल्ड वाइड उसकी रेटिंग को इतनी खास नहीं है. एयरब्लू इज 2-star रेटेड एयरलाइन, बट विद इन पाकिस्तान अगर आप बात करें so they have the best culture. Yeah, exactly. Maybe in terms of domestic operations, I talked about that. That's where I choose Airblue. One of the other reasons is the fleet. ठीक है, जिस तरह वो नियोज और A321s और A320s के शौकीन हैं और जिस तरह they introduced them, and I think if I'm not wrong, they have the youngest fleet of A320s and the other Airbuses right now in Pakistan. So what's your comment on the fleet? Okay, so Airblue started their operations from the beginning with the Airbus A320 family. Airbus A320 family, before it was too cool to operate an A320 in the region, Airblue was taking lead in that. और उस वक्त, I won't say in the region, I would say in the country, उस वक्त Airblue 320s लेके आई थी. फिर उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो Airblue ने A340s लाने की भी कोशिश की थी. 340s are basically 4 engines, single aisle aircraft. They were built to fly longer for long haul flights, but they turned out to be a disaster. They were not so successful because they were like sucking out the fuel. They were called fuel. जो जहाज basically aviation में बहुत ज़्यादा fuel खाता है, उसको fuel guzzler कहा जाता है. So basically, they were fuel guzzlers. Airblue did try to enter into UK market with the 340s, and they did actually with successful operations. But however, the problem with that aircraft was that it was costing them around 22 lakhs every week to sustain the cost of operating that aircraft, and the profitability and the operations, the revenue was not that much streamlined. So Airblue को तो उसका उतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने वो जहाज फ्लाई किया, जिन लोगों ने उसके ऊपर रेटिंग्स की, उन लोगों की जिंदगियां बन गई. क्योंकि 330 और A340 आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बिकॉज मल्टा इंजन आ जाते हैं, डबल बड़ा जहाज है, वाइड बॉडी जहाज है. सो जितने लोगों ने 340s के ऊपर रेटिंग्स की थी,
वो लोग, उन लोगों के लिए गल्फ में एयरलाइंस में दरवाजे खुल गए, और बहुत सारे लोग जो है वो उस जमाने में इत्तेहाद में, गल्फ एयर में, कतर एयरवेज में, एमिरेट्स में, उस टाइम पे एमिरेट्स भी A330 चलाती थी, सो वो लोग वहां चले गए। सो एयरब्लू ने खैर उससे, उस गलती से सीखा, और एयरब्लू ने ये तय कर लिया कि अब हम ऐसा कोई पंगा नहीं लेंगे, और दे स्टिक टू द प्लान। उन्होंने लो कॉस्ट का मॉडल अपनाया, सिंगल टाइप एयरक्राफ्ट विच वाज द A320 फैमिली। अब A320 फैमिली की इतनी अच्छी बात यह है कि ये जहाज जो हैं वो सिर्फ साइज में डिफरेंट है, बाकी हर चीज इनकी सेम है। अच्छा। A318, 19, 20, 21, they are all same. They can share same engines. They can share same seating, same kind of seats. They share same kind of spares. Engine may be different, because जो आपका A318 है, बेसिकली आपको लगता ये है कि वो बहुत छोटा जहाज है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता, बट A318 इज बेसिकली अ लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट। A318 जो है वो ब्रिटिश एयरवेज लंदन टू न्यूयॉर्क की फ्लाइट पे चलाती है, सो इट इज अ लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट। बट 319, 320, 321, these are the aircraft which Airblue has flown in the past. अभी भी 321s और 320s चल रहे हैं। मैं आपको एयरब्लू की एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। बेसिकली वो ये है कि एयरब्लू डायरेक्टली थ्रू अ लेसर फैक्ट्री से जहाज लीज आउट करती है, और अपनी लीज पीरियड के खत्म होने के बाद वो जहाज खरीद लेती है। दैट्स द स्ट्रैटेजी। और एयरब्लू का जो मॉडल है, बेसिकली मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि अगर आप एक कामयाब एयरलाइन बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एयरब्लू की एग्जांपल दूंगा पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अब एयरलाइन बिजनेस में ना, कॉस्ट इज द किंग, ठीक है, या इनफैक्ट मे बी किसी भी बिजनेस में जो आपकी कॉस्ट है वो बादशाह है। एयरलाइन में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, और आपके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं। सो कॉस्ट इज द किंग। आप हत्तल इम्कान कॉस्ट कहाँ कहाँ से बचा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड लो कॉस्ट कैरियर्स। लो कॉस्ट कैरियर्स का ये मतलब नहीं है कि आपको सस्ता टिकट देते हैं, वो उसका मतलब बेसिकली यही है कि उनकी कॉस्ट कम होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और वो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। दे ऑपरेट सिंगल टाइप ऑफ फ्लीट, ताकि उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लीट के ऊपर पायलट्स को ट्रेन ना कराना पड़े, इंजीनियर्स को ट्रेन ना कराना पड़े, जो कैबिन क्रू है उसे ट्रेन ना कराना पड़े। सो यू सेव योर cost of training your aircraft, training your crew on multiple fleet, rather than you just train them on a single fleet. फिर उसके बाद you fly all economy aircraft. Airblue flies all economy aircraft. फिर उसके बाद Airblue now actually has started, in fact recently, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-2 साल पहले, they let you choose a fare class in which you can basically choose between the types of fare that you want to pay. So you can fly, if you are flying without luggage, you can fly light. You can fly with your one single handbag, and that's it. But let's say that you are still flying with one baggage. They let you choose that fare type, which gives you a baggage as well. And then if you are a heavy traveler, they give you another type of fare, which is called, I guess, extra. And you can basically fly with the heavy baggage as well. So these are the traits of a true low cost airline. Okay. Only thing which the Airblue does and a normal low cost would not do is offer a hot meal service on board during the flight. So that becomes necessity. एयरब्लू का मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वो अपनी कॉस्ट बचाती है। वो कैसे कैसे बचाती है, मैंने आपको कुछ 2-3 बातें बताई, लेकिन एक और ऐसी बात है जो कि लो कॉस्ट नहीं करती। लो कॉस्ट कभी जहाज खरीदती नहीं है, वो जहाज लीज आउट करती है, इस्तेमाल करती है, वापस कर देती है, ठीक है। लेकिन एयरब्लू जहाज खरीदती है, ओन करती है,
which ठीक है. quite honestly impressed me a lot when I learned that. I'll tell you why they do it. Because it saves them cost. How it does? Airblue basically, अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो कभी, तो Airblue पिछले जब से इनफैक्ट स्टार्ट हुई है, apart from one of thing which they tried to pull off to go to the UK, उसके अलावा Airblue ने सऊदीया और यूएई या बीच में थोड़ा अरसा कुवैत किया था, इसके आगे वो कभी नहीं गए. टर्की जाने की उन्होंने कोशिश की, कुछ अरसा वो 321 पे टर्की वाया टर्की फ्लाइट्स भी चलाते थे यूके के लिए, बट दैट फेल्ड बिकॉज नो वन वांट्स टू हैव अ स्टॉप इन टर्की, जस्ट अ टेक्निकल स्टॉप टू रिफ्यूल एयरक्राफ्ट. लेकिन एक बहुत लंबे अरसे से, इनफैक्ट पिछले तकरीबन 8-9 सालों से एयरब्लू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदीया से बाहर नहीं निकली. उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि एयरब्लू का जो बिजनेस मॉडल है, इट्स अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल. एयरब्लू कहती है कि हम वर्टिकली अपनी कॉस्ट इतनी कम कर लें कि हमें एक्सपैंड करने की जरूरत ही ना पड़े. हमें जहां हम ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट उसी पे इतनी ज्यादा कम हो कि हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा फैट हो जाए. ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू डोंट सी मैसिव एंड एग्रेसिव एक्सपेंशन. अब just a personal question, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ है. अब मी ऑनेस्टली क्या पता मेरे अंदर टेम्परेरी ये फीचर है, बट एज अ पैसेंजर आई समटाइम्स इन्जॉय कि यार चलो 5-6 आवर्स का क्यूट सा एक नए एयरपोर्ट के ऊपर स्टॉप होगा मेरा, राइट? डू यू इन्जॉय दैट या यू प्रेफर डायरेक्ट फ्लाइट्स? इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यूर गोइंग वाया दुबई या टर्की या समवेयर न्यू. It depends. It depends on my travel type. If I'm traveling leisure, then it's okay. If I'm traveling urgently for some urgent matters, then I would prefer flying direct. However, yes, I do. I love transiting. In fact, I love going out while transit. So there was once in my life which was my longest transit, and in that too I could not get out, was at Istanbul Ataturk Airport. Yeah. And that was the longest transit I've ever taken. That was for 27 hours. Mera, I think longest has been 16 hours. So yeah, just because I wanted to So see you, the Turkish airport, I took मतलब that. वही एक मुझे हमेशा क्यूरियसनेस होती थी. Do you consider कि Pakistani passengers, they are really sensitive to transits and stopovers? Yes, they do. Yes, they do. Unless if it's no option left, they would highly prioritize to get a direct connection, because they don't really care basically, unless they are going to a destination where there is no direct option, like Europe, somewhere in Europe or somewhere in Northern America, or maybe Australia, or Africa, or maybe Far East, जहाँ पे आपको direct connection नहीं मिलता. Maybe शायद उसके ऊपर they would compromise, but otherwise if the direct connection is available, they would definitely choose that. The problem with Pakistan is why direct connections are not available is because Pakistani airlines have the ethnic travelers. पाकिस्तानी एयरलाइंस के ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं और बाहर के लोग ट्रैवल नहीं करते. अब the airlines basically need to learn that they have to bring in the money by not just offering the service to the ethnic travelers, but the other travelers as well. And how you do that, basically you do it by effectively implementing a hybrid hub and spoke and a point-to-point business model. That's I'm talking in terms of PIA, basically, because they can do it. They have the capital and they have the fleet to do it. They can easily make Islamabad international hub, and they are still in fact having most of their international flights from Islamabad. They can certainly adopt a business model of Turkish Airlines or Saudi Airlines, because they both of these airlines have their indigenous traffic as well. They cannot go as PIA. They can never go hub and spoke completely, because they have indigenous traffic. They have traffic from different major hubs. But if it's Airblue cannot do that in terms of point to point. Neither Airblue can offer transits, because for that to offer transits, you need to invest a lot of capital in building a transit hub.
And in building a transit hub facility, it basically means that you should have a baggage transfer service, transfer desks, probably a hotel which is available on inside the airport, because कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग आएं और आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए और फिर आपको जो है उनको होटल देना पड़े वगैरह वगैरह वगैरह. सो फॉर एयरब्लू इट वुड बी क्वाइट टफ. मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि एयरब्लू का मॉडल है वर्टिकल इंटीग्रेशन. हैव यू एवर बीन टू सेवर? Saver Foods. यस. Oh, yes, of course. It's basically like Airblue is basically the Saver Foods of Pakistani airlines. Acha. Saver Foods. That's a Yes. very interesting word Yeah, to describe it, example. and that's true. I agree. लेकिन बड़े मजे की Yes. example है. Why? Because Saver Foods grows their own rice. They have their own poultry. They have their own everything. They also believe in vertical integration to basically lower your cost so much that it won't affect you. So Airblue does the same. How? Airblue have their own ground handling. Airblue have their own engineering. Airblue have their own passenger services. Airblue have their own aircraft, their own pilots, their own airport staff or whatever you say, their own drivers. They are directly hired by Airblue. They're not third parties. And last but not least, they don't have a flight kitchen. That's the reason they have outsourced the hot meal service to a third party, because they are a low cost airline. They adapt a complete low cost model with a few of other traits with usually low cost doesn't have. They don't have a flight kitchen. उनकी जो onboard meal service है वो kitchen cuisine से आती है. वो kitchen cuisine prepare करती है. So if you want to literally have a complete airline package, और आप कहते हैं कि जी आप शाहीन की तरह गिरना भी नहीं चाहते, so Airblue is your example. आप Airblue से सीख सकते हैं. That is the reason they're standing steady. They have the art of getting the brand new aircraft from the factory. They've taken two Airbus 320s directly from the factory. They had around two 321s which directly came from factory. They have now the two 321 neos which have directly come from the factory. इसके अलावा आपकी PIA के पास डायरेक्टली फैक्ट्री से जहाज आते थे, और Serene Air के पास एक ऐसा जहाज है जो कि डायरेक्ट फैक्ट्री से आया था. That too was a cancelled order. But Airblue का जहाज Airblue की अपनी मर्जी के मुताबिक Airbus तैयार करती है, और वो एक लेसर के थ्रू उसको लीज आउट करती है, और अपने लीज पीरियड के बाद वो उस जहाज को खरीद लेती है और उसको ओन कर लेती है, ताकि Airblue को कोई ओनरशिप कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि लीज की कॉस्ट है, वो Airblue को देनी ना पड़े. देन अगेन you narrow your cost so much that your profit gets fat. नहीं बिल्कुल ऐसे ही है. एंड दिस इज़ वाई आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय एयरब्लू. ठीक है, देयर बिजनेस मॉडल, देयर ब्रांडिंग, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पुश बैक किया, उनका कल्चर जहाँ तक मुझे नज़र आया, वाज वेरी इम्प्रेस्ड. अब ऑनेस्टली दिस माइट बी नॉर्मल इन एयरपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ लाइक दुबई या आउटसाइड, बट आई एम फ्रॉम अ थर्ड नेशन कंट्री. ठीक है, जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ एक लो कॉस्ट कैरियर पे मैं जा रहा हूँ, मुझे चेक इन काउंटर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची. ठीक है, मैंने ऐप के ऊपर ही चेक इन किया और मुझे ई बोर्डिंग पास मिल गया और मैं डायरेक्ट गया हूँ गेट पे, मैंने शो किया लास्ट मिनट में और मैं अंदर गया. राइट, फिर मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे हॉट मील मिल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड आई वाज लाइक इट्स गुड. हाँ ज़रूर एक चीज़ मुझे लास्ट अपने ट्रैवल पे मुझे बॉदर की है कि दे आई थिंक प्लेड अराउंड अ लिटिल बिट विद देयर सीट कॉन्फ़िगरेशन एंड लेग रूम स्पेस, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस एंड वी चूज़ टू फ्लाई ऑन इट. बाकी अब टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट एयरब्लू, अब मेरे हिसाब से व्हाट आई बिलीव इज़ कि after which Airblue really made a bounce back is the famous and sorry Airblue Flight 202 crash. ठीक है, in Islamabad. मेरा गाँव उस तरफ पड़ता है, so whenever I go I always have that site. It's still the same, it's burned. वहाँ पे अभी तक it's still scrapped and it of course it hurts me and it's something I think we will never forget, right? Coming into that again, for looking for a positive outcome, talking about the 202 crash. ठीक है, जब मैंने
ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग सुनी, जब मैंने थोड़ा सा when I got to know about the facts, it disturbed me. ठीक है, it was really disturbing. ठीक है, what is your comment on, of course we all of us know the reason of the crash. ठीक है, it was quite clear, लेकिन again वही बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, और भी leading events होते हैं. But what's your take on the 202 crash, and what do you think Airblue got out of it, and how has it affected Airblue? Like I said, Airblue basically learned from its mistakes. ठीक है, उन्होंने उससे गलती से सीखा. गलतियां हो जाती हैं, इंसान है, we are at the end of the day humans and we make mistakes. But what makes different is the difference is then when you learn from your mistakes. And Airblue have this art of learning from their mistakes as well. So 202 crash was unfortunate and it was completely avoidable thing. But सिर्फ एक इंसान की ईगो की वजह से उस फ्लाइट पे तमाम लोग जो थे वो जो है वो आज हम में नहीं है. However, Airblue aggressively responded to that. मैं कोई Airblue की प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, I'm just stating facts. और I personally know a few people who just tried to play with the culture inside the organization. They had to they were given a kick and they were shown the way out. So Airblue में मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ, और their culture is I really admire, and I hope and I wish the other airlines also could follow Airblue in that matter, in that regard, because पाकिस्तान में अपनी गलतियों से सीख के इम्प्रूवमेंट लेके आना बहुत रेयर है, सिर्फ एयरलाइंस में ही नहीं, हर जगह पे. ठीक है, so in that regard you should appreciate Airblue, you should acknowledge what they have achieved so far and what they have acknowledged in all these years. उन्होंने बकायदा पाकिस्तान में इतना लंबा अरसा again supporting so many jobs overseas as well, in Saudi and UAE. उसके बाद obviously जहाँ जहाँ जहाज जाता है, ground handling services लेना और ये सारी चीजें ये matter करती हैं. So for that matter, Airblue is better than any other choice if you can have in Pakistan. Not Serene, not Airblue, not Air Sial. It is okay for mistakes to happen, but important यही होता है कि आप उससे reflect back करें, right? आप उससे सीखें. अभी आई एम अ कस्टमर, और एज अ कस्टमर मैं यही कहता हूँ कि यार मिस्टेक्स आर ऑल दे आर पॉसिबल, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट इज़ द मेन स्पॉटलाइट. ठीक है, और in terms of when we're talking about PIA, Shaheen या कोई भी airline हो, even Airblue, if there has been a crash, there has been a such incident, what hurts us more is कि यार future protected है, right? आपने उससे कुछ सीखा है, कुछ प्रिवेंशन हो रही है, और दुख ज़्यादा तभी होता है when you see that mistake happening again, right? अब again, see, of course it was the pilot's issue, pilot's fault. There is no, I don't think there is no debate on that. But again, I believe in the gray area. ठीक है, I believe कि यार मैक्सिमम एक बंदे एक चीज़ का कसूर 99% हो सकता है, 1% तो किसी और चीज़ को दो, राइट? पायलट भी इंसान है, उसका पता नहीं घर पे कितनी इश्यूज हो सकते हैं, कितना स्ट्रेस में हो सकता है, वो क्या पता अनइंटेंशनली ईगो में हो या जिस भी सिचुएशन में हो. अब अगेन मेरा यहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है, एंड आई रियली लुक फॉर द आंसर टिल नाउ, कि हमारे एविएशन इंडस्ट्री में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, फिजियोलॉजिस्ट नहीं हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि मंथ में वंस या 5 टाइम्स या वंस अ वीक समथिंग टू चेक अप ऑन द पायलट्स एज वेल, समथिंग टू आस्क द पायलट्स एज वेल. ठीक है, कि उनका मेंटल स्टेट क्या है, उनका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, आर दे ओके मेंटली, आर दे देयर. ऐसा कुछ कल्चर है? अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू से ऑन दिस? Okay, so Airblue do have their aeromedical doctors, they do have psychologists, and they do get the sessions as well. And their own aeromedical doctors basically assess the pilots, and they basically also internally give them a fit to fly.
और जो आपने एक बात की कि जी ठीक है एक पायलट था उसकी गलती थी, 99% उसकी गलती थी, वो 1% किसी और चीज को दे दो। वो 1% बेसिकली उस दिन जो उस 1% का रोल था वो वेदर का था। वो वेदर उस दिन जो था वो क्लाउडी था, इट वाज रेनी वेदर आम 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 के लिए, इट वाज थंडरस्टॉर्म वेदर। और वो वेदर उस दिन जो है वो फेवर में नहीं था आपके। और on top of that again it's a chain of events which makes things worse. So that's why on that day it was unfortunate of that guy being in a ego, और उसके बाद on top of that आपका weather. So this chain of events when come through and come together, that's why the crashes happen anywhere in the world. दुनिया में कोई भी क्रैश होता है, बोइंग 737 मैक्स की आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट्री आ गई अब तो नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, सो यू गेट टू डू दैट। अच्छा बिलाल, सी नाउ हियर्स द थिंग, अगेन मेरे एक साइड मुझसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाई वाई आर वी गोइंग बैक एंड टॉकिंग अबाउट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड। अब उसके पीछे रीज़न एक ये है कि एक ही क्वेश्चन मेरे जहन में इट रिवॉल्व्स अराउंड कि हैव वी लर्नड, इज़ देयर समवन आउट देयर नीड्स टू नो कि यार जो आपकी जनरेशन जी आ रही है, जनरेशन एक्स आ रही है, जो जनरेशन आ रही है, दे रियली केयर, और ये आपसे कल को सवाल पूछेंगे। आई विल बी ऑनेस्ट, हमारी पिछली जो जनरेशन्स गई हैं सवाल पूछने वालों में से नहीं थी। एंड हेयर्स व्हाट आई बिलीव कि ये ट्रांजिशन अभी आपकी मेरी हमारी जनरेशन्स में आएगा, ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, ऑफ नॉट बीइंग क्वाइट, राइट, कि हम नहीं भूले, राइट। अब इन टर्म्स ऑफ द 202 क्रैश, मतलब आई डोंट इवन, मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग है कि आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू डेप्थ कि यार अब पायलट ने कितनी बार एटीसी वार्निंग इग्नोर की, कितनी बार फर्स्ट ऑफिसर को इग्नोर किया, किस तरह से उसने ट्रीट किया वगैरह वगैरह, बिकॉज दैट्स ऑल ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इट वाज रॉन्ग, इट्स स्पॉइल्ड मिल्क, उसको और हाथ मार के नथिंग, वी आर नॉट गोना गेन एनीथिंग, राइट। पायलट एरर था, ह्यूमन एरर था, कंप्लीटली अवॉइडेबल था, ठीक है। अब पायलट ईगो आ गई बीच में, एटीसी वार्निंग्स आप इग्नोर किया, फर्स्ट ऑफिसर को इग्नोर कर रहे हो, हाउ मेनी थिंग्स कैन यू एट द एंड ऑफ द डे यू कैन इग्नोर, राइट। अब मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स इट वाज अ नाइटमेयर, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ अस, कि आपका देखो अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की पीआई के 8303 के लैंडिंग के बारे में, ठीक है। इट वाज व्हाट शॉक मी द मोस्ट इज के चलो यार दैट वाज एन अटेम्प्टेड बेली लैंडिंग और अटेम्प्ट्स की गई थी लैंडिंग के लिए। व्हाट शॉक मी अबाउट द फ्लाइट 202 क्रैश वाज के यार मार्गला हिल्स। On अब that अगेन day, what exactly happened? Number one, you didn't have the visibility. Number two, your crew, your pilot in command was being egoistic. Number three, you didn't have the infrastructure at the airport available to land safely in that kind of weather as well. Number four, उस वक्त सीआरएम ट्रेनिंग का कोई खास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं कि जो फर्स्ट ऑफिसर था वो ओवर पावर कर सकता पायलट इन कमांड को. So yes, Airblue at that point in time they faced that. Unfortunately, Pakistan itself faced it. अगेन वी कैन गो बैक एंड फोर्थ ऑन द क्रैश, इट वाज वेरी सैड, ठीक है। जब मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट आई बिलीव, इफ़ द एयरलाइन और इफ़ अ पर्सन एनी वन हैज़ टेकन अकाउंटेबिलिटी और उसको वो फिक्स कर रहा है, आप उसको और मतलब गंदा ना करो, ठीक है। if it has recovered from it, if it's trying to fix it, if it has shown proof कि यार we took that seriously and we're working on it and we're trying to improve, that's it, it's okay. But of course what's not acceptable what happened on the flight 202, ठीक है। again अभी भी मैं जब याद करता हूँ it hurts me, it's something that was avoidable, something that needs to be put out there कि um, you know we just don't forget events like this. और honestly ये ऐसे दाग होते हैं कि they stay at least for a customer like me, मेरे दिल के अंदर हमेशा whenever I'll be purchasing a ticket. It happens unfortunately. I think मतलब इतने कार क्रैशेस होते हैं, इतने बस क्रैशेस होते हैं, इतने बस ड्राइवर्स मिस्टेक्स बनाते हैं, इतने हादसे हो जाते हैं, बट व्हेन एवर इट केम टू एविएशन इट इज़ थोड़ा सा ज़्यादा मसाला, आई बी सॉरी टू से। एंड हेयर्स व्हाट आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक एविएशन ट्रैवल इज़ मोर सेफर दैन कार और रोड ट्रैवल, ठीक है। जहाँ तक मैंने रेशियो पढ़ी है, जहाँ तक मैंने एक्सीडेंट्स और इवेंट्स की रेशियो पढ़ी है, द फेटेलिटी रेट ऑफ aviation is quite less, right? But of course because there are big numbers involved and it's already psychological तौर पे it's a bit sensitive thing flying in there, it's always more sensitive. अब speaking of Airblue, of course मतलब एक बात मुझे उनकी अच्छी लगती है कि they are the
they are Airbus lovers, right? अब going to the other side of the perspective, आप Serene को देखें, वो Boeing family है, right? अब 737s यूज़ कर रहे हैं. अब here's the thing, ये एक मोटो चला था बहुत पहले 737 मैक्स के दौर में कि if it's Boeing I ain't going. So what is your take on that? Do you believe on that? What's your intake between if it's a Boeing 737 and if it's an A320, what would you choose and why? So yes, when you have you have mentioned Kiji, Airblue is Airbus lover and Serene is Boeing lover. Well, Serene is not exactly Boeing lovers. No, but in terms No of one choosing between A320 and 737, Boeing goes, Serene Air goes with the Boeing model, yeah, right? Of course, उन्होंने और भी they Airbus went models to induct किए Boeing. हुए हैं. They went to Boeing and there was a reason for it, because the pilots for Boeing 737s were readily available, because again 737 was operated by Air Indus. You are forgetting Air Indus, by the way. We never talked about it. Air Indus ने 737s ऑपरेट किए, भोजा ने 737s ऑपरेट किए, शाहीन ने 737s ऑपरेट किए, PIA ने 737 ऑपरेट किए. आपके पास एक बहुत बड़ा चंक पायलट्स का मौजूद था उस वक्त मार्केट में 737s का. 320 के इतने नहीं थे, क्योंकि 320 रिसेंटली आए थे शाहीन में भी और PIA में भी, ये 2013, 14, 15 के बाद. सो 737 के बेतहाशा पायलट मौजूद थे, और इस वजह से सरीन ने समझा कि हमें, क्योंकि 737 के ऊपर सिर्फ जो पायलट्स हैं उनको एक रिफ्रेशर और रिकरंट कराना पड़ेगा, और दे विल बी good to go with the newer 737 NG's simulator training. So that was the reason. Or why they did not choose A320? Because they must have got a better deal for 737. Of course, at the end of the day, you have to choose what suits your pocket. So that could be the case. Serene को 3 brand new Boeing 737s जो कि Boeing के cancelled orders थे, if I'm not mistaken. Sun Express एक Turkish airline है, उसके cancelled orders थे, उसके 737s Serene को बहुत सस्ते रेट्स पे मिल रहे थे, और Serene ने 3 जहाज कमिट किए थे. एक जहाज BNA जो उनका है वो लेके आए, बाकी 2 जहाज आने थे लेकिन आ नहीं सके. We can expect them to come, maybe. I don't know exactly what's the update on that, ठीक है. but that was the case. So coming back again, if it's Boeing, you're going or you ain't going? Well, for me, it matters. What matters is the aircraft fly. अच्छा. ठीक है. But yes, I am a Boeing lover myself. अच्छा. And for what reason I'm a Boeing lover is possibly the yoke that they have in a cockpit, in their cockpits. I do love Airbus as well. I love A330. I love traveling on A330. My father is due to travel next week to my place, and I booked him both of his flights on A330. अच्छा. So yes, in narrow bodies, I don't exactly like 320s, but yes, I loved 320 Neos because of their engines and because of the power they incur and they can produce, and because of the economic fuel efficiency and the economic characteristics that aircraft brings. So uski wajah se 737 Max, it is a good airplane, but it has a design flaw which Boeing cannot exactly remove it. And they have made so many 737 Maxes that they cannot afford to ground them all and build a brand new 737 again. So maybe possibly they will find a way out to fix it, and they will one way or another Boeing 737 Max. 737 itself, if you know, that model had actually failed when it was introduced. Sirf 6 units बिके थे start में, but then it became the backbone of regional travel. Again, 737 Max, it fell down. Today, A320 1987 में आया था, 737 1960s में आया था, और 2021 में ही Airbus A320 family sales had exceeded what the number of 737 Boeing had sold. So Airbus has already taken over the narrow body market, and Boeing doesn't have much of a share left, unless the airlines who are completely dependent on 737, such as Southwest, Ryanair, Fly Dubai,
आपकी इंडिया में आपकी सन एक्सप्रेस, आपकी स्पाइस जेट, इसके अलावा बहुत सारी एयरलाइंस जो टोटली 737 पे डिपेंडेंट हैं, उनके अलावा you won't find a lot of airlines going for 737 because Airbus is offering extremely cheap deals if they are buying in bulk. In the recent days, you'll be hearing out that Air India is also going to choose 320s, 320 Neos because they are eyeing an order of 300 aircraft after their privatization. And what I firmly believe that they are going to choose the Airbus because the Airbus already dominates the Indian skies. Again, Bilal, business has setbacks आते हैं, and I said that before कि एविएशन में इट्स ऑलवेज बिन थोड़ा सा ज़्यादा मसाला, राइट. अगेन मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी से क्रेडिट एक मिस्टेक के ऊपर छीन रहे हैं तो आप उसको एटलीस्ट बाकी चीज़ों का क्रेडिट दें जो वो डिज़र्व करता है, राइट. अब I टॉकिंग would अबाउट, disagree ओके यू वुड डिसएग्री. अब वाई, मतलब मेरे 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 because मेरा मेरा ये because बिलीफ है, जस्ट हेयर मी आउट I'll कंप्लीटली. tell you I'll tell you अब why I disagree. I अब अगर disagree because of a reason. Just let me hear me out. I disagree because of a reason. Aviation, if you say कि दुनिया का safest mode of travel है, it cannot bear a mistake. Yes, you might be an experienced pilot. Yes, you might be having thousands of hours or whatever it is. You chose and you signed up not to make a mistake. And when you make a mistake, people pay it by their lives. So you don't deserve anything. If you chose, no one asked you. You chose, you signed up for it. That okay, I'm going to become a pilot. I won't make any mistakes because I am not supposed to make mistakes. Flying is against the nature. आप अल्लाह ने आपको उड़ने की सलाहियत नहीं दी. आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं. जब आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, फ्लाइंग इस वक्त दुनिया में सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल इसीलिए है कि कोई 99.9%, 99.8%, 99.99999% no. Either it's 100% or it's nothing. So you're saying so the aviation में pilot there is basically, yes, the pilot basically signed up कि भाई मैं खुद अपने आप को पेश कर रहा हूँ, मैं जो है गलती नहीं करूंगा, मैं जहाज प्रॉपरली उड़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. आप अगर खुदा ना खास्ता कोई पायलट इस तरह कोई गलती करे, पायलट एरर की वजह से साबित हो जाए और वो बचा हुआ हो और उस पर साबित हो जाए कि वो पायलट एरर था और उसकी गलती थी, आप मुझसे अभी लिख के रख लें, दुनिया में तो क्या मार्स के ऊपर भी उसको कोई फ्लाइंग नहीं करने देगा. ठीक है, नहीं, आई एग्री विद दैट. नाउ सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि भाई एविएशन की इंडस्ट्री में you do not have the space and you do not have the luxury to make a small mistake. अगर मेरे 10,000 flying hours हैं, अगर मैंने एक flying hour मिस्टेक कर दिया है, पानी फिर गया. Yes. और आपका सारा आप डिस्क्रेडिट हो. Yes, it does. आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी. 15,000 20,000 घंटों वाले लोग, तो उनसे एक गलती हुई, their license were cancelled. That is even if we come out, even if we come that out is of the basically license how thing. you make aviation safe. That is how you basically ensure that aviation is safe. So even if we come out of the license thing, ठीक है, मैं फर्ज कर एयरब्लू के A321 क्रैश के पायलट ही इज देयर एंड साबित हो जाता है आफ्टर ही हैज द से एंड एवरीथिंग दैट ही वाज मिस्टेकन. सो you say कि now we should discredit all of his previous yes achievements. Yes. And अगर बेशक fatality ना हो और उसने लेकिन सिर्फ रिस्क पे डाल दिया हो. Yes, you cannot do that. आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले PIA के एक पायलट ने काबुल से जहाज उड़ा दिया था on his own Afghanistan. Yep. Yes. Or he was the hero. Was that right? He landed as a hero. But if anything would have went wrong, who was to blame? Pilot. यही पायलट एसोसिएशन आगे दीवार बन के खड़ी होती, यही सारी दुनिया जो उसको हीरो कह रही है उसको गालियां दे रही होती कि इसने क्यों उड़ाया जब इसको पता था कि सेफ नहीं था. That is why I always say you cannot blame the pilot. If it's not proven, you cannot blame the pilot. If he is dead and he cannot defend himself, you should not be blaming the pilot. Why? Because you were not there what he was facing.
None of us was there to face that what he was facing at that time. He might be having flashes. वो भी इंसान है, उसकी भी फैमिली है, उसको अपनी मौत सामने नजर आ रही है कि नहीं? So you should not be blaming the pilots. Yes, if it's proven, if the pilot is alive, he does not deserve to fly any airplane in this world and on any other planet also. कि जिसमें वो बिल्कुल अकेला खुद भी अगर जहाज उड़ा रहा हो, then because he is threat to himself. There is no chance of mistakes. आप किसी गल्फ की एयरलाइन में मुझे ये करके दिखा दें और आप बच के दिखा दें मुझे, मैं आपको जो आप बोलेंगे मैं आपका नाम देने के लिए तैयार हूं. Bilal, we'll leave it at that. I think that's a good message. Thank you so much for joining us in, and it's been an honor. It's been a pleasure discussing this with you, and inshallah, see you in the next podcast.